Hello, my kids. How are you all? I hope you all are good and fine. Today we are going to learn a new letter, and the letter is letter J. Which letter? Letter J. How do we write letter J? Sleeping line, standing line, and a small curve. Sleeping line, standing line and a small curve. Okay kids, letter J हम कैसे लिखेंगे? Sleeping line, standing line and a small curve. Here there is capital letter J and small letter J. This is capital letter J and this is small letter J. जैसे आपकी मम्मा बड़ी है और आप छोटे हो ना बच्चों, वैसे ही ये वाला जे बड़ा है और ये वाला जे छोटा है. ओके किड्स, हमें ये बड़ा वाला जे लिखना है. सो हाउ डू वी राइट लेटर जे? स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड अ स्मॉल कर्व. Sleeping line, standing line and a small curve. Now what sound does it makes? It makes the sound J. J. Okay, it makes the sound J. 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 Okay. So now we will see some objects that start with letter J. What is this? J for jar. J for jar. This is a jar. जार में आपकी मम्मा बहुत सारी चीज़ें रखती है ना, कभी चॉकलेट्स, कभी कुकीज़, कभी पल्सेस, बहुत सारी चीज़ें मम्मा रखती है ना जार में. सो दिस इज जार. जे फॉर जार. जे फॉर जार. नाउ नेक्स्ट इज जे फॉर ज्वेलरी. जे फॉर ज्वेलरी. मम्मा ज्वेलरी पहनते हैं ना बच्चों, मम्मा, दादी और भी कितने सारे जन ज्वेलरी पहनते हैं ना, गोल्डन कलर की ज्वेलरी, राइट? सो दिस इज ज्वेलरी. जे फॉर ज्वेलरी. जे फॉर ज्वेलरी. नाउ दिस इज यमी यमी जैम. जे फॉर जैम. जैम हम किस में लगाते हैं बच्चों? ब्रेड में लगाते हैं, रोटी के साथ भी खाते हैं. यमी यमी टेस्टी टेस्टी फ्रूट जैम आपको पसंद है ना बच्चों? So this is J for jam. J for jam. This is J for jacket. J for jacket. We wear jacket in winters, right? Generally हम जैकेट कब पहनते हैं? Winters में पहनते हैं ना, जब ठंडी आती है तब हम जैकेट पहनते हैं ना. So this is J for jacket. J for jacket. Now the last is J for jug. J for jug. जग में हम क्या भरते हैं बच्चों? पानी भरते हैं ना हम जग में. पानी लेते हैं ना फिर जग से ग्लास के अंदर में. सो दिस इज जग. जे फॉर जग. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द ऑब्जेक्ट्स. ओके. जे फॉर जार. जे फॉर ज्वेलरी. जे फॉर जैम. जे फॉर जैकेट एंड जे फॉर जग. How do we write letter J? Sleeping line, standing line and a small curve. Sleeping line, standing line and a small curve. Sleeping line, standing line and a small curve. Okay my kids, this is letter J. Now what we will do? We will sing a rhyme for letter J. Are you all ready? Yes. I am J. The letter J. I make the sound J, J, J. So come with me and sing with me. These are some words that start with J. J for jar. J, J, jar. J for jewelry. J, J, jewelry. J for jam. J, J, jam. J for jacket. J, J, jacket. And J is for jug. J, J, jug. So come with me and sing with me. These are some words that start with J. Okay kids, this was the letter J. Sleeping line, standing line, half circle. Sleeping line, standing line, half circle. Okay kids,
Now I will show you some more objects that start with letter J. Are you all ready to see that? Okay, come with me. See, what is this? This is J for jellyfish. क्या है ये बच्चों? J for jellyfish. इसको जेलीफिश क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जेली की तरह होती है. ये फिश एकदम जेली की तरह होती है, इसलिए इसको जेलीफिश बोला जाता है. एंड इट लिव्स इन water. Fish lives in water, right? So this is J for jellyfish. J for jellyfish. Jellyfish. Okay, kids? Now next is J for jet. J for jet. जेट भी एरोप्लेन और रॉकेट की तरह स्काई में उड़ता है. ओके किड्स, सो दिस इज जे फॉर जेट. जे फॉर जेट. नाउ नेक्स्ट इज जे फॉर जीप. जे फॉर जीप. जीप में जैसे कार होती है ना बच्चों, कार एक व्हीकल है ना, वैसे ही जीप भी एक व्हीकल है. जीप में बैठकर भी हम बहुत सारी जगह जा सकते हैं. सो जे फॉर जीप. J for Jeep. Next is J for juice. J for juice. हम जूस पीते हैं ना बच्चों, कितने सारे फ्रूट्स का जूस पीते हैं, वेजिटेबल जूस भी पीते हैं. जूस इज very healthy for us, right? We should drink juice every day. It makes us healthy and strong. So this is J for juice. J for juice. And the last is J for joker. J for joker. जोकर की रेड नोज होती है ना बच्चों, और जोकर कितना फनी होता है ना, हमें जोकर कितना हंसाता है ना. सो दिस इज J for joker. J for joker. Okay kids, now once again I am repeating the words for you. J for jellyfish. J for jellyfish. J for jet. J for jet. J for juice. J for juice. J for jeep. J for jeep. And J for joker. J for joker. J for joker. So I have taught you letter J. Sleeping line, standing line, small curve. Sleeping line, standing line, small curve. Okay my kids, this was letter J. Now we are going to trace letter J on this yellow color. Sleeping line, standing line, small curve. 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 Sleeping line, standing line and small curve. Okay kids, this is letter J. Which letter is this? Letter J. You have to trace letter J like this and practice. Okay my kids? Now we are going to do page number 24 in our Disney book. Okay kids? Which letter is this? Letter J. How do we write letter J? Sleeping line, standing line and a small curve. Sleeping line, standing line and a small curve. Okay kids, this is capital J and this is small j. ये बड़ा J है और ये छोटा J है. Okay, what you have to do in this? You have to paste the stickers like this. Letter J. J for jug. J for jam. Now small j. Okay. आपको सबसे पहले ये स्टिकर्स पेस्ट करने हैं एंड देन यू हैव टू कलर द जग. व्हाट इज दिस? दिस इज अ जग. और आपको ये जग को कलर करना है with this golden color, or you can take any color of your wish. Okay, how do we color it? First we have to color its borders like this.
सबसे पहले हमें इसके बॉर्डर्स को कलर करना है एंड देन वी विल कलर इन इनसाइड. ओके. इधर लेफ्ट टू राइट और अप एंड डाउन. This is J for jug. J for jug. So like this you have to color the jug. Okay kids. J for jug. Now we are going to write letter J in our English notebook. Parents, you have to make big letter J like this and small dots like this. और बच्चों आपको क्या करना है, सबसे पहले we will do rainbow tracing. So you all are ready for rainbow tracing? Yes, let's start. Sleeping line, standing line, half curve. Sleeping line, standing line, small curve. Letter J. Sleeping line, standing line, small curve. 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 Okay kids, last. Sleeping line, standing line, small curve. Letter J. And then what we will do after rainbow tracing? We will join the dots to make the letter J. Parents, you have to make the dots like this. Sleeping line, standing line, small curve. 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 ओके किड्स, आपको लेटर जे इस तरीके से आपके नोटबुक में लिखना है. ओके किड्स, दिस पेज एंड दिस पेज ऑल्सो. सो यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस एट होम. दिस इज लेटर जे. जे फॉर जैम. प्रैक्टिस करना बच्चों घर पे और अपना ध्यान रखना. ओके किड्स, बाय.